Welcome to finals between Falcons and AFGHAN Tigers. What exciting semi-finals we had. Falcons and AFGHAN Tigers both won all the games to get to the semi-final. Well worthy of finals. Of Falcons versus AFGHAन Tigers. दोनों लोकल टीम है ह्यूस्टन के. इस वक्त जो है Falcons की टीम में आप देखें काफ़ी बड़े नाम हैं. वलीद शब्बीर came all the way from California. सनी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही सनी की लास्ट सेमीफाइनल में. साद जे, हमजा बंगश, असद मिर्ज़ा, आतिफ राना, साद राजवानी, अली बंगश, जेजी बी, नैस जे और दरवेश अली. बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है फैल्कन्स की. और टॉस जीता है AFGHAN टाइगर्स ने और वो पहले फील्डिंग कर रहे हैं. अब अगर हम AFGHAN टाइगर्स, बोथ टीम्स आर लोकल टीम, AFGHAN टाइगर्स की टीम पे नज़र डालें अगर, AFGHAN टाइगर्स की टीम ज़्यादातर लोकल ह्यूस्टन के प्लेयर्स हैं. बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी अब तक. इस पूरे टूर्नामेंट में कोई गेम नहीं हारा है दोनों टीमों ने. They are well worthy of being in finals. So it's going to be exciting finals. Stay tuned और हमारे साथ रहिएगा. इस वक्त नदीम सनी के नाम सनी के नाम से जाने जाते हैं. काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी सेमीफाइनल में. बहुत ही एक्साइटिंग सेमीफाइनल था थंडरबोल्ट्स वर्सेस फैल्कन्स का. और फैल्कन्स जो है वो मैच जीते. उसमें सनी एंडी ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की. आई थिंक स्कोर 50. उनके साथ जो है वलीद शब्बीर, ही केम ऑल द वे फ्रॉम कैलिफोर्निया. बस ये हमारे साथ यहाँ पे पहले नेशनल चैम्पियनशिप में भी खेले हैं. टेक्सास टूर्नामेंट से पहले नेशनल चैम्पियनशिप थी और उसके बाद विंटर कप था. ही स्कोर्ड 500 in the last T10 tournaments we had here. तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी अब तक. तो देखिए क्या होता है. एक्साइटिंग मैच लग रहा है होगा ये बिटवीन Falcons and AFGHAN Tigers. थोड़ा सा होल्ड अप, इस checking the side screen. So we have a tri-vision side screen. It'll be one of a kind. I think it's probably one of a kind in Houston area for sure. Just a hold up. We're just setting up. It's going to be exciting finals. Stay tuned with us. We're going to start with the finals shortly. We're just having a few issues with the scorecard, seems like. Falcons has won the toss and decided to bat. A well-worthy final between Falcons and AFGHAN Tigers. Both of the team have won all the league games and they have won the semi-finals also. Here we go.
बॉल थी, अच्छी बॉल स्टार्ट की। हमारे साथ बॉलर सब मौजूद हैं। फनी बॉलर हैं और अच्छी बॉल और क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट और इस तरह 1 रन मिलेगा फैल्कन्स को। वली शब्बीर फेस करेंगे, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं वली शब्बीर। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी इस टूर्नामेंट में भी और हमारे साथ नेशनल चैम्पियनशिप में भी खेले थे और काई विंटर कप में भी यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन स्कोर सेंचुरी। और उनके साथ जो है सनी खेल रहे हैं। सेमीफाइनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही सनी की और पुल द गेम अवे फ्रॉम थंडरबोल्ट्स इन सेमीफाइनल। There's again a hold up, just trying to adjust the field placement, seems like. Counting the players, seems like. Apologies about the background noise. We're testing few things, we're getting ready for final presentation also. There's a final going on. AFGHAN TIGERS versus FALCONZZ. This is a great thing. So Coach Amir, can you hear me good, loud and clear from the speaker on the stadium? ICCMC. Is it clear? Can you hear me for the station ceremony and for commentary as well? So I can give it to Adil, I think. So there seems to be some hold up now. Getting ready. Again, it's a final between Falcons and AFGHAN Tigers. Falcon ने बहुत अच्छा perform किया. They won all the games. Similarly, AFGHAN Tigers have. They also has won all the games, including the semi-finals. They won big against Shining Stars in semi-final number 2. They win, I think, with the 56 runs. It's a strong team. They have a good batting lineup and bowling lineup as well. AFGHAN Tigers. Seems to be some hold up there. अगर आप हमें अभी ट्यून इन कर रहे हैं, so it's a final of Texas Cup 2022. Falcon versus AFGHAN Tigers. Both are local Houston teams. काफ़ी अच्छी players हैं. Falcons में काफ़ी बड़े players हैं. हमजा बंगश, अली बंगश, वली शब्बीर is playing with them also. He came all the way from California. Hamza Bangash, of course, he doesn't need any introduction. Similarly, Ali Bangash, well-known players in Houston. Both of them, they play for minor league as well. I think we are just about to resume. Seems to be some discussion around. आज इस टेक्सास कप का लास्ट डे है. बहुत ही एक्साइटिंग टूर्नामेंट रहा अब तक और ये फाइनल भी is going to be very well worthy of being final. Both teams have won all the games to get to the final stage. On paper, Falcon looks pretty strong. AFGHAN Tigers also बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी अब तक उस टूर्नामेंट में. So here we go.
सनी नदीम के साथ वलीद शब्बीर आए हैं। सनी की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही थी सेमीफाइनल में इससे पहले अगेंस्ट थंडरबोल्ट्स। आज जो है इस kind of breezy, windy. Last night was really calm. Temperature would be, I would say, around high 50s. Or we are playing in ICCMC, ISA Cricket Club and Multi-Sports Complex in Houston. One of a kind facility with a professionally installed floodlights. Here we go. और अच्छा शॉट खेला टूवर्ड्स द मिड विकेट, वहाँ पे फील्डर मौजूद हैं, कोई रन नहीं मिल सकेगा। वलीद शब्बीर का कल भी शॉट्स देखे थे हमने कि काफ़ी शॉर्ट आर्म जैक की तरह वो शॉट हिट करते हैं। नो फॉलो थ्रू बट बॉल रियली ट्रैवल्स इफ ही कनेक्ट्स वेल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, ही इज बीन रियली परफॉर्मिंग वेल अक्रॉस द नेशन। कैलिफोर्निया से इनका ताल्लुक है, ही इज हियर ऑल द वे फ्रॉम कैलिफोर्निया टू प्ले फॉर फैल्कन्स। और अच्छी डिलीवरी थी, मिड विकेट की तरफ खेला और वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद है और सिर्फ एक रन बनेगा। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं गनी, कोई ऐसी अभी तक बॉल बड़ा शॉट नहीं आया है और अच्छी स्विंग हो रही है, हवा भी है इस वक्त, काफ़ी ब्रीजी है आउटसाइड एंड बॉलर इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। लेग की तरफ थी एम्पायर और अच्छे फील्ड किया, कीपर से मिस हुआ बट ही हैड अ बैकअप इन शॉर्ट फाइन लेग, सो एम्पायर इज गोना कॉल अ वाइड डिलीवरी। बैट्समैन वाज अपीलिंग फॉर अ नो बॉल, वेस्ट हाई नो बॉल, बट इट वाज डिक्लेयर्ड अ वाइड डिलीवरी। नर्व्स आर हाई, फाइनल है बड़ा टूर्नामेंट का और दोनों टीमें जो है बड़ी अच्छी परफॉर्म करके पहुंची हैं फाइनल तक, वेल वर्दी ऑफ बीइंग फाइनल। और वलीद शब्बीर इस वक्त फेस करेंगे और गनी जो है बॉलिंग करा रहे हैं। एंड चेंज किया बॉलर ने। और लेग की तरफ थी, पुल करना चाहते थे, wasn't that short to pull but he wanted to play towards the mid wicket, कनेक्ट नहीं कर पाए और इस तरह एक डॉट बॉल मिलेगी वन टाइगर्स को। वन टाइगर्स इज अ डिसेंट बॉलिंग लाइनअप, अभी सेमीफाइनल्स में उन्होंने दूसरी टीम को आई थिंक 80 पे ऑल आउट किया। They won the game by 53 runs in the semi-final before this. और अच्छा शॉट खेला, फुल टॉस बनाने में कामयाब हुए, play towards the long on और इस तरह first boundary of the finals. It came from the bat of वलीद शब्बीर और इस तरह score moved up to 9 runs. We still have 2 more ball deliveries to go in this over. कंटिन्यू करेंगे गनी और बहुत अच्छा मिडिल विकेट की तरफ शॉट था, अच्छा शॉट खेला डीप मिड विकेट की तरफ। फर्स्ट 6 ऑफ द फाइनल्स बाय वलीद शब्बीर। बॉल केम इन हिज आर्क, कनेक्ट रियली वेल। अगेन उनका फॉलो थ्रू जो है वो इतना लिमिटेड है बट द बॉल रियली ट्रैवल्स इफ ही कनेक्ट्स। नाउ ही इज गोइंग बैक टू ओवर द विकेट, राउंड द विकेट में वाजंट रियली दैट सक्सेसफुल। और एक और अच्छा शॉट खेला डीप मिड विकेट की तरफ, एक और 6 रन और बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला है फैल्कन्स को। पहला ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया है 21 रन तक और उसमें शब्बीर के 2 सिक्सेस और 1 बाउंड्री शामिल है। एक्सीलेंट स्टार्ट बाय फैल्कन्स। अभी पहले ही ओवर से दे आर ट्राइंग टू पुट आउट वन टाइगर्स अंडर प्रेशर। इन वलीद शब्बीर इज अ वेरी वेल नोन हिटर
He scored 100 here when he was playing last in Winter Cup. और बहुत ही अच्छा start Falcons का. This will put AFGHAN Tigers in a tremendous pressure. AFGHAN Tigers की काफ़ी decent bowling lineup है. They can come back. They just need a couple of quick wickets. और पहले ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 21 तक. अंपायर ने वाइड कॉल की, वाइड डिलीवरी. दोबारा बॉल करवानी पड़ेगी शारिक को. और बहुत अच्छा शॉट खेला. अगेन मे कम इनसाइड और कैच लेने में कामयाब. बिग विकेट. Wali Shabir was looking very dangerous, good shot, but because the wind, ball stayed within the boundary and fielder made no mistake. और इस तरह पहली विकेट का नुकसान, काफ़ी बड़ी विकेट मिली है अफगान टाइगर्स को. He started really well, वली शबीर, और पहली विकेट. अब बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है लॉन्ग ऑन पे फील्डर ने. He took his time, or ball was really moving around because of the wind, but he kept his eyes on the ball, or he able to take a very critical catch. तो इस तरह पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ा फैल्कन्स को. स्कोर 23 पे. अभी दूसरे ओवर का गेम भी शुरू हुआ है. तो बहुत ही अच्छा ब्रेक थ्रू मिला अफगान टाइगर्स को. साद पंजवानी खेलने आए हैं. ऑल्सो इज ए गुड प्लेयर. काफ़ी हार्ड बॉल में भी वो खेलते हैं. तो मच नीडेड ब्रेक थ्रू फॉर अफगान टाइगर्स. काफ़ी अच्छी शाहिद ने अच्छी बॉल की. पहली बॉल पे वाइड पे 2 रन आए थे. He came back and Waleed couldn't connect the ball as well as he wanted, और काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन पे. और स्विंग एंड मिस, अच्छी डिलीवरी थी और ऊपर खेला. काफ़ी बड़ी हिट मारना चाहते थे और मिस की. और लकी ही डिडंट हिट दिस, गॉट दिस विकेट बिकॉज वे वाज वेरी क्लोज टू द स्टंप्स. और इस तरह जो है स्कोर 23 पहुंच चुका है. अब दूसरे ओवर का गेम जारी. और टॉप पेच लगा है. फील्डर नीचे आ रहे हैं और एक और विकेट का नुकसान. फैल्कन्स ने बड़ा शॉट खेलने गए. साद पंजवानी. Ball probably was not there to hit towards the mid wicket and he got the top edge and fielder made no mistake. और इस तरह दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा फैल्कन्स को. They are coming under pressure now. First over was really good for them. They scored 21 runs. और सेकेंड ओवर में की तीसरी बॉल पर उन्होंने दूसरी विकेट का नुकसान उठाया. और disappointing. साद पंजवानी is going back. अच्छा स्टार्ट हुआ है अफगान टाइगर्स का. और tense dugout of Falcons. They keep in mind they have a deep batting line.
They have Hamza Bangash, Ali Bangash, Darvesh. They bat really deep. और इस वक्त आप सराउंडिंग का नज़ारा कर रहे हैं. People are here enjoying the finals. And ये हमारी LED screen. Beautiful screen, one of a kind. I think पूरे US में ऐसी screen नहीं होगी. It's a huge screen. People are enjoying watching the live game on the screen as well. और ये है हमारा media box. इसमें नवेद ईसा, आमिर सदीकी और myself are here. And बहुत ही एक्साइटिंग टूर्नामेंट हो रहा है. फाइनल का अच्छा हो रहा है. अच्छी बॉल थी, शॉर्ट बॉल थी. नदीम ने अच्छा कनेक्ट किया, सनी ने, और 2 रन लेने में कामयाब होंगे. आतिफ राना नए बैट्समैन आए हैं. ही इज ऑल्सो अ गुड प्लेयर, गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. वन मोर व्यू ऑफ आवर सराउंडिंग, ब्यूटीफुल सराउंडिंग. फ्लड लाइट्स हैज टेकन अ फुल इफेक्ट. और वन ऑफ अ काइंड ब्यूटीफुल फैसिलिटी ICCMC. और स्विंग एंड मिस, ऑफ पे बॉल थी. अगेन इसको मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे और कनेक्ट नहीं कर पाए सनी. इस वक्त आई थिंक थोड़ा सा इनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा फैल्कन्स को. दे जस्ट लॉस्ट 2 क्विक विकेट्स, बट अगेन दे बैट प्रीटी डीप, सो दे हैव स्टिल लॉन्ग बैटिंग लाइनअप. हमजा बंगश, अली बंगश. वी शोड यू दिस, दे आर प्लेइंग 11. काफ़ी बड़े नाम हैं फैल्कन्स की टीम में. और शॉर्ट बॉल थी, अच्छा खेल दिया उन्होंने गली की तरफ. और कोई रन शायद ना मिले. फील्डर वहाँ मौजूद थे. शॉर्ट बॉल थी, प्ले टूवर्ड्स द गली. थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद. इस तरह सेकंड ओवर के बाद स्कोर मूव होता है 25 पे. वेरी गुड ओवर. He only given like 4 runs. We also got 2 wickets. The score, जो run rate है Falcons का इस वक्त 12.5 है. और काफ़ी exciting final लग रहा है इस वक्त. देखिए कौन आएगा बॉलिंग करने के लिए अफगान टाइगर्स की. देयर इज सम डिस्कशन गोइंग ऑन. और जो हमारे कैमरे हैं, वी हैव मल्टीपल कैमरास इन ऑपरेशन राइट नाउ. वन इज राइट एट द साइड स्क्रीन एंड द रेजोल्यूशन इज सो क्लियर एक्चुअली. थर्ड ओवर का शेर जमान seems like he's going to come in to attack. Atif Rana है strike पे. He's also known to be a good big hitter. Left arm over the wicket. और अच्छी डिलीवरी थी, खेल दिया towards mid wicket की तरफ और 1 रन बनेगा. थोड़ा सा कंसोलिडेट करना पड़ रहा है फैल्कन्स को इस वक्त, क्योंकि दे लॉस्ट 2 क्विक विकेट्स. शबीर वलीद एंड साद पंजवानी. और बहुत अच्छी डिलीवरी के बैट नहीं लगा. और अगेन द टूर्नामेंट रूल के हिसाब से देयर इज नो लेग बाय, नो LBW, देन देयर इज नो लेग बाय. और इस तरह डॉट बॉल मिलेगी अफगान टाइगर्स को. स्कोर जो है 26 है, विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स. थर्ड ओवर इज इन प्रोग्रेस. और स्लो बॉल थी, लेकिन थोड़ा लेग की तरफ गई और कीपर से मिस हुई और एक बाय का रन भी मिलेगा. और इस तरह 2 रन का इजाफा फैल्कन्स के स्कोर में. अच्छा डिसीव किया बैट्समैन को, बट द लाइन वाज लिटिल टुवर्ड्स द लेग साइड और अंपायर ने वाइड कॉल की एंड कीपर कुडंट कलेक्ट. और इस तरह 1 रन का एडिशनल इजाफा प्लस वाइड, सो 2 रन मिले. बहुत अच्छी डिलीवरी ऑफ पे थी. इसको बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट
और इस तरह एक रन का और इजाफा फैल्कन्स के स्कोर में. Score moved up to 29. This is the third over is in progress. I think for the final they need to at least cross 100. One Tigers also has a good batting lineup. और अच्छा शॉट खेला सनी ने. Fielder लेकिन नीचे आ रहे हैं. And he dropped the catch. He came right under the ball. Took his time but couldn't collect the ball cleanly. और इस तरह सनी को एक लाइफ मिली है. Again, Sunny is a good player. He scored 50 in the last game in the semi-final against Thunderbolts. Thunderbolts ने हमें Dallas से join किया था. I'm sure they love the tournament. I got a very good feedback from them. We thank them for coming all the way from Dallas. और अच्छा शॉट एक और खेला डीप मिड विकेट की तरफ और फील्डर वहाँ मौजूद हैं और एक ही रन बनेगा. Score moved up to 32. Third over is in progress. और बहुत अच्छी डिलीवरी है. There's no LBW but was right in front of the wickets. और इस तरह आतिफ ने ये शॉट मिस किया. अच्छी डिलीवरी. Length was really good. It seems like it was coming full toss, but it dipped at the last moment. और बैट्समैन जो है वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाए और इस तरह डॉट बॉल मिलेगी. बहुत अच्छा ओवर करवाया. ओनली 7 रन दिए शेर जमान इस ओवर में और स्कोर जो है इस वक्त 32 पे पहुंच चुका है. रन रेट 10.67. When at the end of the first over, Falcons were 21 runs. So काफ़ी अच्छा पुल बैक किया है वन टाइगर्स ने. They also got 2 wickets. और अब देखें कौन नए बॉलर आते हैं. Sebi seems like he's coming in to attack. Few adjustment. Just a reminder, it's a 10 overs game. So first 3 overs are power play. You can have only 2 outside of the power play, and after power play you can have 5 outside. बहुत ही breezy weather है. It's kind of cold और final is heating it up. और short ball थी, इसको pull करना चाहते थे. Got the gloves on the ball, or I would say no gloves he's wearing, but he got the hands on the ball. और इस तरह एक रन बनने में कामयाब. Ball was there to pull, but I think he couldn't time it properly. और एक रन का इजाफा हुआ Falcons के स्कोर में. रन रेट 10.42 came all the way down from 21, which was at the end of the first over. It's a good comeback by one Tigers. But just a reminder, Falcons play really deep. They have Ali Bangash, Hamza Bangash, Darvish, all a good big hitter. और एक और लेग की तरफ शॉर्ट बॉल थी, पुल करना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए और लेकिन लेग की तरफ बॉल और अंपायर ने वाइड कॉल की है. और अच्छा गेम अब तक चल रहा है. वन टाइगर्स इज अप टू द मार्क. Had given only 34 runs in the third over. After the first over, the score was 21. But now they are coming back very strong. और एक और लेग पे बॉल थी और कनेक्ट नहीं कर पाए आतिफ. एक और हमारा व्यू. This is the second camera. And we have a control on the camera. You can move it around. Excellent facility, ICCMC, state-of-the-art technology you see here. और इस दफ़ा कनेक्ट करने में कामयाब हुए. Last 3 times he was trying the same shot. और इस दफ़ा finally was able to connect properly and connect really good over the head of the deep mid-wicket fielder for 6 runs. I think for the Falcons score जो है वो on track है. I think they should be looking somewhere around more than 100 for the finals. One Tiger also, they play really deep as well.
So it's going to be exciting finals. Remember, both the teams have not lost a single game to get to this state. और एक और शॉर्ट बॉल लेग पे दी और एक दफा फिर कनेक्ट करने में कामयाब आतिफ राना और एक और बैक टू बैक सिक्स और ये प्रेशर अब बैक ऑन अफगान टाइगर्स. Line of the ball was probably not right line. Short ball towards the leg side, or Atif Rana will not miss it. He missed quite a few times before in this over, and then he's not going to miss it every time. एक और शॉर्ट बॉल और एक दफा कनेक्ट करने में फिर कामयाब और एक और 6 रन्स मिलेंगे फैल्कन्स को. Zebi has lost the line completely and the length as well. पहली 2 बॉलों पे अच्छा कंट्रोल कर रहे थे, and then after that he just kept the same line towards the leg side, short and leg side. Atif Rana is not going to miss it out, or he got 3 sixes in a row. So now Afghan Tigers are under pressure. एक और same, almost the same line and same treatment. I think somebody needs to go and talk to Zebi, but very good clean hitting by Atif Rana. 4 sixes back to back, excellent batting by Atif for his team Falcons. I think they are coming up front now so far. After 4 overs, score moved up to 58. तो इससे पहले 2 ओवर में काफ़ी कंटेन करने में कामयाब हो गए थे अफगान टाइगर्स, बट दिस ओवर में 4 सिक्सेस और 26 रन दिए हैं जेबी ने. तो काफ़ी बड़ा ओवर मिला है फैल्कन्स को और रन रेट जो है वो 14.50 हो चुकी है. दैट विल पुट अफगान टाइगर्स इन अ ट्रेमेंडस प्रेशर. एक तो फाइनल्स और फिर इस तरह रन जा रहे हैं तो दे विल बी अंडर प्रेशर फॉर नेक्स्ट at least couple of years, couple of overs till they get some wickets. Afghan Tigers को इस वक्त wickets चाहिए, no doubt about that. और line सही करनी पड़ेगी bowlers को Afghan Tigers के. Sher Zaman, अच्छी ball, that's a good length ball in swinging और mid wicket, middle of the ball, batsman जो है वो उसको mid wicket की तरफ खेलना चाहते थे, couldn't connect. और लाइन और लेंथ बहुत अच्छी थी शेर जमान की और इस तरह डॉट बॉल मिली अफगान टाइगर्स को. अच्छी बॉल पिक किया जवाब सनी ने, खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ और दूसरा रन. वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. थोड़ा सा आउट था बॉलर के लिए. वेंट ओवर द हेड ऑफ द बॉलर and batsman took the foot advantage of throw and got an extra run for their team. The score moved up to 62. अभी 5वें ओवर गेम चल रहा है और बहुत अच्छी डिलीवरी, completely deceive किया सनी को. Changed the pace, took the pace completely off the ball और सनी just went for his shot but ball was not there. At least his ball was gone and then ball reached to the stumps और इस तरह एक डॉट बॉल मिली. अच्छी बॉलिंग की है शेर जमान ने अब तक. दिस इज हिज सेकंड एंड लास्ट ओवर फॉर दिस इनिंग. ही ओनली गिव 9 रन सो फार और अच्छा शॉट खेला सनी ने टुवर्ड्स द गली और इस तरह 1 रन मिलेगा. सनी ने 9 रन्स बनाए हैं अब तक और 11 बॉल्स फेस की हैं, बट एटलीस्ट ही इज होल्डिंग द एंड. एंड राइट नाउ फैल्कन्स स्कोरिंग एट द रन रेट ऑफ 13.07. So they're looking pretty good. और शॉर्ट बॉल और आतिफ राना ने फिर कनेक्ट किया और एक और 6. What a hitting by Atif Rana. He showed up and he showed up at the right time for his team. और इस तरह इसने स्कोर जो है वो 32 पे पहुंच चुका है. आतिफ राना का only 9 deliveries, तो बहुत ही अच्छी हिटिंग. This is I think his 5th 6th of the inning. स्कोर मूव अप टू 67 और अभी 5वें ओवर की लास्ट डिलीवरी है और एक और अच्छी डिलीवरी मिड विकेट की तरफ खेला, लेकिन वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद हैं और सिर्फ 1 रन मिलेगा आतिफ को. और अच्छी बैटिंग, वेरी एग्रेसिव बैटिंग,
good clean hitting by Atif. उनके साथ सनी खेल रहे हैं. There's some change. I think he seems to be coming out. And Hamza Bangash is going in. Falcons is looking to even put some more runs in the score card. 68 runs already scored in 5 overs. अभी run rate जो है वो 13.6 है. So Hamza Bangash is coming in. Sunny is going out. He retired himself. काफ़ी अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया. बैट्समैन सनी ने वो अपनी विकेट नहीं फेंकी है उन्होंने और अच्छा सपोर्ट किया. लेकिन इस वक्त आई थिंक दे नीड मोर बिग हिट्स और Hamza Bangash is coming to bat. Hamza Bangash, very well known players. He doesn't need any introduction. और अच्छी डिलीवरी, swinging leg towards the leg side. Mid wicket की तरफ खेलना चाहते थे but couldn't connect the ball. It was a good pace and ball was swinging also. और अच्छा स्टार्ट किया है सलमान ने. Next couple of overs they need to contain. और अच्छी डिलीवरी, स्पेस निकाला, खेला towards the long off और very good running between the wicket. इस तरह कंटिन्यू करेंगे. सलमान अच्छी बॉलिंग की है अब तक इन्होंने. स्कोर जो है 70 रन और बहुत अच्छा शॉट खेला. एक और 6 मारा है आतिफ राना ने टुवर्ड्स द डीप मिड विकेट. शॉर्ट बॉल थी. He picked it really well and really early, swinging the bat towards the deep mid wicket and got an additional 6 runs for his team. Now score moved up to 76 और ये 6 ओवर की गेम जारी है. रन रेट जो है वो 13.82 है. ये लुकिंग प्रीटी गुड. ओ स्विंग एंड अ मिस. बॉल इस दफ़ा इतना बाउंस नहीं किया जितना आतिफ राणा वाज एक्सपेक्टिंग. बॉल स्टेड लो एंड देन ही मिस्ड द बॉल. रेयर डॉट बॉल फ्रॉम अफगान टाइगर्स. Anything over 100 will be a tremendous pressure on Afghan Tigers because the final itself adds the pressure. So let's see what they do. They need wickets, Afghan Tigers. और अच्छा खेला वहाँ पे फील्ड और कैच ड्रॉप किया. कवर की तरफ गया. टॉप पिच लगा था. फील्डर वहाँ मौजूद, आई थिंक एहसन वहाँ मौजूद थे और वो कैच पकड़ने में कामयाब नहीं हुए. और आतिफ को एक लाइफ मिली है. He's been playing really good. He moved up to 42 in just 15 deliveries. और उनके साथ देने आए हैं हमजा बंगश, big striker of the ball, very well known player in Houston. He plays for minor league as well. और दफा कनेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए और नीचे आए और एक दफा फिर कैच ड्रॉप कर दिया. दैट कुड बी अ कॉस्टली मिस. और जगल किया सेकंड अटेम्प्ट में. थर्ड अटेम्प्ट में ही couldn't collect the ball. That could be a costly miss by Afghan Tigers. 2 balls पे 2 कैचेस और द सेम फील्डर के पास आए और दोनों कैच करने में कामयाब नहीं हुए. Some encouragement to the fielder who dropped 2 catches. Now he's moving his location. I'm sure the ball is going to follow him. That's what happens usually if you're not collecting or getting the catch. Ball will always follow you.
ये 2 विकेटें अगर मिल जाती हैं अफगान टाइगर्स को तो थोड़ा सा गेम का चेंज होता, प्रेशर में आते फैल्कन्स, but they got a good big chances, both of those batsmen, Atif Rana and then Hamza Bangash. और ऑफ पे थी, हमजा बंगस को खेलना चाहते थे ओवर द हेड ऑफ कवर, बट वो काफ़ी वाइड बॉल अंपायर ने वाइड कॉल की। और बहुत अच्छी डिलीवरी, इस दफा एज लगा और कीपर ने कोई मिस्टेक नहीं की, और हमजा बंगश जो लाइफ मिली थी उसको नहीं अवेल कर सके, और इस तरह फैल्कन्स ने अपनी 3rd विकेट लूज की है। और बहुत अच्छा कैच पकड़ा कीपर ने, काफ़ी थिक आउटसाइड एज लगा था एंड कीपर टुक अ वेरी गुड कैच। काफ़ी एक्साइटमेंट है, गेम इज kind of still, I would say, tilting towards Falcons. They have scored 79 already. And the 7th over in progress, run rate is 12.81. I think they're targeting anything over 100. And that will add pressure to Afghan Tigers. Darvesh आए हैं बैटिंग करने, again very well known player of Houston. Last match की semi-final में hit the winning runs and won the game by hitting a 6 against Thunderbolts. To continue, a short ball थी और उसको पुल करना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए। I think ball was there to hit. Of course, this is his first ball. He was facing, Darvesh was facing, तो उसको सही तरह टाइम नहीं कर पाए और डॉट बॉल मिलेगी। अच्छा ओवर कराया अब तक गनी ने, और एक्सीलेंट डिलीवरी, बहुत ही अच्छी लेंथ थी, क्लोजर टू द स्टम्प्स, और कनेक्ट नहीं कर पाए दरवेश, और इस तरह डॉट बॉल मिली है अफगान टाइगर्स को। Scored is on 79. The 7th over is in progress. Run rate is 12. और अच्छा शॉट खेला, ऑफ पे थी और खेल दिया 3rd मैन की तरफ, और वहाँ फील्डर मौजूद थे लेकिन काफ़ी दूर से गई उनके पास से, और इस तरह एक और बाउंड्री मिली फैल्कन्स को, और स्कोर हो गया है 83। काफ़ी स्कोर ऑन ट्रैक है, ओवर 100 फॉर श्योर, और अच्छी डिलीवरी, और तो इसको कट करना चाहते थे लेकिन जो है वो बॉल अच्छी थी, क्लोजर टू हिज बॉडी, वाज नॉट देयर टू कट, एंड देन ही मिस्ड द बॉल। लकीली ही डिडंट गेट एनी एज। गनी का 2nd ओवर है, 1st ओवर में ही गेव 21 रन। अच्छी डिलीवरी थी ऑफ पे, और उन्होंने पुल किया टूवर्ड्स द लॉन्ग ऑन। आई थिंक टेंडेंसी ऑफ प्लेयर्स इज टू पुल एवरी बॉल फ्रॉम ऑफ टू ऑन इन टेप बॉल। Play a lot of, you see a lot of cross shots compared to what we see in traditional leather ball and tape ball. क्रॉस शॉट्स खेल सकते हैं टेप बॉल में बिकॉज देयर इज नो LBW, so you have advantage that if you miss the ball you probably won't at least get bowled. So cross shot खेलने की काफ़ी tendency usually I have seen in the tape ball cricket, but I would say even if it's tape ball cricket, if you play a proper shots you can still get value of your shot. और इस तरह 7th ओवर के बाद स्कोर 83 है, रन रेट इज 12.00।
3 ओवर से गेम बाकी है और आई एम श्योर Falcons is trying to score over 100 and they will be able to get to over 100 for sure. And that was seems like they still have got a lot of batting coming in. Oh, बहुत अच्छी delivery. I think seems like the keeper couldn't get a hold of the catch, but nevertheless it was a dot ball for AFGHAN Tigers. They are trying to pull back the score. काफ़ी अच्छी last couple of overs में काफ़ी अच्छी bowling की है AFGHAN Tigers ने. सलमान का ये सेकंड ओवर, फर्स्ट ओवर में उन्होंने 10 रन दिए और बोल्ड कर दिया. बहुत ही अच्छी डिलीवरी राइट इन द मिडल स्टंप और दरवेश एक दफा फिर क्रॉस शॉट खेलने गए और कंप्लीटली मिस द बॉल एंड बॉल बिल्कुल मिडल ऑफ द मिडल विकेट लगी और इस तरह दरवेश अपनी विकेट खोने में कामयाब हो गए. जेजी आए हैं. Again, he's also a very good hitter of the ball. That's what we saw last night. कि काफ़ी अच्छी बैटिंग जेजी ने की है लीग गेम्स में और अभी भी 3 ओवर ऑलमोस्ट 3 ओवर से गेम बाकी है. स्कोर इज 84. दे हैव लॉस्ट 4 विकेट्स. लेकिन अभी इनके पास अभी भी काफ़ी बैटिंग लाइन है. जेजी है, उसके बाद फिर अली बंगश इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर. So they still have a lot of batting to come. AFGHAN Tigers की बॉलिंग काफ़ी अच्छी है. लास्ट चार्जर्स के अगेंस्ट इन द लीग गेम दे वर एबल टू डिफेंड 82 और दे हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल गेम. They won all 3 league games in the semi-final against Shining Stars. I think with a huge margin. I think it was over 50 runs. के मार्जिन से सेमीफाइनल जीते AFGHAN टाइगर्स ने और फैल्कन्स भी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. फैल्कन्स का सेमीफाइनल वाज वेरी वेरी क्लोज. थंडरबोल्ट्स ऑलमोस्ट पुल्ड इट ऑफ बट दरवेश एंड सनी की बैटिंग की वजह से दे वर एबल टू गो ओवर द लाइन. नाउ दे प्लेइंग फाइनल्स अगेंस्ट AFGHAN टाइगर्स. Chezzy B और पहली बॉल फेस करेंगे. अगेन ही इज ऑल्सो वेरी क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. लेग पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लेकिन बहुत अच्छी स्ट्राइक करते हैं बॉल को. वी सॉ इट लास्ट नाइट इन हिज परफॉर्मेंस. बहुत अच्छी डिलीवरी, अच्छा पिक किया जेजी ने टुवर्ड्स द लॉन्ग, आई वुड से टुवर्ड्स द मिड विकेट और वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद और एक ही रन बनेगा. अच्छी बॉल की जेजी ने. बॉल वाज स्विंगिंग इन और आतिफ राना इज प्लेइंग एक्सीलेंट इनिंग. 42 रन पे हैं. ओनली 15 डिलीवरीज. आई थिंक ही हिट लाइक 5 or 6 sixes so far. काफ़ी अच्छी बैटिंग की आतिफ राना ने अब तक और स्कोर जो है 85 हो चुका है. I think at one point it was looking that Falcons may go well over 120. AFGHAN Tigers pulling it back a little bit और शॉर्ट बॉल थी और फिर पुल करना चाहते थे towards the mid wicket और कनेक्ट नहीं कर पाए. क्रॉस शॉट था. इट वाज वेरी क्रॉस और मिस किया और इस तरह एक डॉट बॉल मिलेगी AFGHAN Tigers को. They are pulling back very good. The run rate has dropped down to 11. At one point the run rate was 14. Again, anything over 100 would be still a good score, especially in finals. And still like more than 2 overs remaining in this inning. और बहुत अच्छा शॉट खेला और फील्डर वहाँ मौजूद स्ट्रेट ऑन लॉन्ग ऑन पे और कोई मिस्टेक नहीं की फील्डर ने इस दफ़ा. और आतिफ राना बहुत ही अच्छी बैटिंग करने के बाद वापस आ रहे हैं डग आउट की तरफ. बट ही स्कोर्ड 42 इन 16 और 17 डिलीवरीज. बहुत अच्छी हिटिंग की थी आतिफ राना ने
और इस तरह फैल्कन्स अपनी 5th विकेट लूज की. They still have 2 overs remaining, 2.1 over to be exact. Run rate has come down to 10.85. At one stage it was 14 runs per over. काफ़ी अच्छा पुल बैक कर रहे हैं अफगान टाइगर्स. अफगान टाइगर्स also have a good batting lineup. They scored 136 again in the last semi-final against Shining Stars, and they had a big win against them. So they also have a momentum with them. So they are looking pretty good at this stage. 10.85 run rate है इसका Falcons का. और बहुत अच्छी डिलीवरी, इन स्विंग बॉल, और जो है जस्ट गॉट द इनसाइड एज ऑफ हिज बैट, और 1 रन मिलेगा. और इस तरह 8 ओवर के बाद स्कोर इज 86. 2 more overs to go. बहुत अच्छी बॉलिंग कराई सलमान ने. सिर्फ 12 रन दिए हैं 2 ओवर्स में, तो बहुत ही एक्सेलेंट बॉलिंग बाय सलमान. बॉलिंग स्टैट्स पे नज़र डालें तो अब तक जो है गनी रहमान ने 27 रन दिए हैं, 1 विकेट ली है. शाहिद कुरैशी ने 1 ओवर में 2 विकेटें और 4 रन लिए हैं. आई थिंक ही प्रॉब्ली विल कम बैक. एक्सेलेंट बॉलिंग बाय हिम. शेर जमान ने 17 रन इन 2 ओवर्स. ज़ैबी ने काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, 26 रन दिए 1 ओवर में. और सलमान ने अपना अभी दूसरा ओवर जस्ट फिनिश्ड. ही गिव ओनली 12 रन इन 2 ओवर्स. और शाहिद आएंगे और अ वाइड बॉल टुवर्ड्स द लेग साइड, और सो कनेक्ट नहीं कर पाए, तो फिर टुवर्ड्स द लेग साइड, और इस तरह एक्स्ट्रा रन मिलेगा फैल्कन्स को. बहुत अच्छा पुल बैक किया है अफगान टाइगर्स ने. एट वन स्टेज द रन रेट वाज 14, पुल इट बैक, नाउ रन रेट इज अबाउट 10. और बहुत अच्छी डिलीवरी और मिस हुई बैट्समैन से. और डायरेक्ट थ्रो कुड बी डेंजरस फॉर द बैट्समैन. और अच्छा सिंगल लिया. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, बट अली बंगश couldn't connect the ball. The ball line and length is really good. He couldn't get under the ball because to hit big, you need to go under the ball. और लेंथ बहुत परफेक्ट थी फ्रॉम शाहिद. उनका ये 2nd ओवर है और अभी तक सिर्फ 6 रन दिए हैं और 2 विकेटें भी लिए हैं. बहुत ही अच्छी बॉलिंग है शाहिद की. few adjustment in the field. और ऊपर लगा और कीपर just fall off before the ball could get to him. और इस तरह वो कैच ड्रॉप हो गया. I think you got a little excited because it could be a big wicket for Afghan Tigers, और कीपर्स को नहीं कैच कर पाए, और इस तरह चेजी को एक चांस मिला. चेजी बहुत अच्छे हिटर हैं. उन्होंने लीग गेम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है. शाहिद he's the pick of the bowler in this inning. बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई अब तक शाहिद ने. और एक दफा फिर ऑफ पे बॉल और स्विंग एंड अ मिस. और अली बंगश जो है प्रेशर में आ रहे हैं. उन्होंने 2 रन बनाए हैं 3 बॉलों पे, तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह वो चाहते हैं. और इस तरह रन रेट इज 10.47 नाउ. और जब कनेक्ट करने में कामयाब हुए, बट वहां फील्डर मौजूद, और स्ट्रेट टू द फील्डर इन डीप मिड विकेट की तरफ. और इस तरह अली बंगश has lost his wicket.
Now this is the sixth wicket loss for Falcons. Or their Afghan Tigers are coming back really strong because at one stage the run rate was 14 per over. They pulled back really good. And the score is 89. They have 8.4 overs completed and 1.2 overs remaining in this inning. असद आए हैं खेलने के लिए. He's a good bowler. I think he can also hit the ball. शाहिद जो है for sure is the pick of the bowler. 7 runs दिए हैं. सेकंड ओवर चल रहा है उनका और 3 विकेटें भी ली हैं फैल्कन्स की. तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है शाहिद ने अब तक. और there's few adjustment on the field placement. और बहुत अच्छी डिलीवरी आउटसाइड एज लगी बट वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद. अच्छी फील्डिंग की ज़फ़ा हसन ने और सिर्फ एक ही रन बनेगा और इस तरह स्कोर मूव अप टू 90. और इसकी एक बॉल बाकी है इस ओवर की, 9th ओवर की. बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है शाहिद ने. 8 रन दिए हैं अपने सेकंड ओवर तक. तो लुकिंग रियली गुड फॉर देम. और शॉट खेला असद ने और टूवर्ड्स द डीप मिड विकेट रीजन की तरफ और बहुत अच्छी रनिंग. जस्ट गॉट 2 रन्स और एक्सीलेंट बॉलिंग बाय शाहिद और स्कोर मूव्ड अप टू 92. लॉस ऑफ 6 wickets. 1 more over remaining in this inning. I'm sure they want to go over 100. Run rate is 10.22. Very good bowling display by Afghan Tigers. At one stage, it was looking the match is going away, slipping away from Afghan Tigers, but they came back very strong. And the score is 92 and run rate is 10.22. Wait for the bowler. Shade Afzal seems like he's here. Wait for the confirmation. Who is bowling the last over? Shade Afzal also plays cricket all around. और अच्छी delivery थी towards the leg side. Jay-Z couldn't connect it well. Went towards the fine leg और इस तरह 1 रन मिलेगा. Score moved up to 96. Loss of 6 wickets. Last over है Falcons का. They need to go at least 400. Afghan Tigers also be back pretty deep. Falcons की भी बॉलिंग भी काफ़ी डीप है. हमजा बंगश, अली बंगश, असद, काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं उनके पास. Falcon के पास. It's going to be exciting chase. और बहुत अच्छी डिलीवरी और पुल करना चाहते थे but ball was not short to be able to pull, and then he just got the inside edge for a single. Jay-Z जो है he couldn't connect really well in this inning so far. बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर हैं बॉल के और अच्छे क्लीन हेडिंग करते हैं. और अच्छा शॉट खेला जेजी ने और इस तरह 6 रन मिलेंगे. मच नीडेड बाउंड्री. द स्कोर हैज मूव्ड to 100 exact. 3 more balls remaining
अच्छा शॉट, अच्छा पिकअप शॉट खेला जेजी ने. Much needed boundary for Falcons. Now 3 more balls remaining. Oh, अच्छी डिलीवरी शॉट थी. It was there to hit on the, और exactly जहाँ वो जेजी खेलते हैं उनके आर्क में थी, but couldn't connect the ball. इस तरह डॉट बॉल मिली और तक 8 रन दिए हैं शेर अफजल ने. और सी व्हाट हैपेंड लाइक लास्ट 2 डिलीवरीज. और इस दफ़ा फिर बॉल ऑफ पे थी, पुल किया टूवर्ड्स डीप मिड विकेट और 2 रन बनेंगे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट जेजी की और उनके साथ असर बहुत अच्छी रनिंग कर रहे हैं. स्कोर मूव अप टू 102. दैट इज द गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस. कीप इन माइंड एट वन स्टेज they were going with the run rate of 1-4. One Tigers pulled it back quite well और straight shot खेला इस दफा और 4 रन मिलेंगे बैट्समैन को. was a good finish by Falcons. Score moved up to 106 at the end of 10 overs. And Afghan Tigers will be chasing 107 to win it all. Texas Cup 2022. Both teams have not lost a single game to get to final stage. It's going to be an exciting chase. You wait and we will be right back after a couple of minutes.
welcome back to finals. The second inning is about to underway. Ali Bangash आएंगे. Just a reminder, it's the finals of Texas Cup between Falcons and AFGHAN Tigers. Falcons ने पहले बैटिंग करते हुए 106 रन्स बनाए और 107 का टारगेट दिया है. रिक्वायर्ड रन रेट 10.7. देखते हैं कैसी बैटिंग होगी. बहुत ही अच्छा मैच. इस तरह फैल्कन्स की भी काफ़ी बॉलिंग लाइन भी काफ़ी अच्छी है. अली बंगश, हमजा बंगश, असद, दे आर गुड बॉलर्स. It's going to be exciting finish of finals of Texas Cup 2022. Here we go. पंकज आएंगे. खैबर और शेर जमान ने अच्छी बॉलिंग की थी. लेफ्ट से बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी लेफ्ट से करते हैं और अच्छा शॉट खेला टुवर्ड्स द कवर और बहुत ही अच्छा प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट बाय खैबर. और इस तरह उनको जो है पहली बॉल पे बाउंड्री मिली है. और अच्छा शॉट खेला और एक और बाउंड्री. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं शेर जमान और 2 बॉलों पे 2 बाउंड्री मिली हैं. इस दफा ऑफ पे बॉल थी, गली के बीच से गुजरी, गली और पॉइंट के बीच से 4 रन के लिए. और अच्छा शॉट खेला शेर जमान ने. और इस तरह रिक्वायर्ड रन रेट जो है इज मूव डाउन स्लाइटली 10.24. 99 more runs to win. Falcon ने 106 बनाया है. 107 और अच्छी बॉल थी. फिर ऑफ पे खिला, लेकिन यहाँ फील्डर वहाँ मौजूद है. इस दफ़ा सनी ने अच्छी फील्डिंग की है और एक ही रन बनेगा. गुड कमबैक बॉलिंग बाय अली बंगश. स्कोर मूव अप टू 9 रन बन चुके हैं. अब तक 3 बॉलों को खेल हुआ है. और इस तरह रिक्वायर्ड रन रेट इज 10.32 और खैबर पहली बॉल फेस करने जाएंगे. और अच्छा टॉप पेज लगा है, कीपर नीचे आ रहे हैं और ही कंप्लीटली मिस्ड द बॉल. और बैट्समैन ने कोई रनिंग नहीं की बिकॉज दे थॉट ही इज आउट. और इस तरह कोई रनिंग नहीं की और सिर्फ वेट करते रहे कीपर का कि बॉल पकड़े. और कीपर ने बॉल नहीं पकड़ी और बैट्समैन वहीं खड़े रह गए. और एक और लाइफ मिली है बैट्समैन को, खैबर को. Wind is the ball been moving around a bit और कीपर बॉल के लाइन में नहीं आए, कंप्लीटली मिस की बॉल. बंगश कंटिन्यू करेंगे और लेग ऑफ पे बॉल थी और अच्छा पिक किया खैबर ने. और इस तरह 6 रन मिलेंगे टुवर्ड्स द डीप फाइन लेग. और लेग पे थी, शॉर्ट बॉल थी और स्विंग किया बैट्समैन ने एंड ही वाज एबल टू कनेक्ट. और इस तरह 6 रन मिलने में कामयाब. और अब तक अच्छा स्टार्ट हुआ है अफगान टाइगर्स का. 15 रन बना चुके हैं और अभी भी एक बॉल बाकी है इस ओवर की. अली बंगश विल कंटिन्यू. अच्छी बॉल मिडल और सिंगल लेना चाहते थे बट द फील्डर इज राइट देयर और कोई रन नहीं मिलेगा. वांटेड टू प्ले टुवर्ड्स द लेग साइड और आउटसाइड एज टुवर्ड्स द कवर रीजन और सिर्फ डॉट बॉल आई है. और इस तरह फर्स्ट ओवर के बाद स्कोर मूव हुआ है 15 रन. नाउ required run rate is 10.22. शेर जमान फेस करेंगे हमजा बंगश जो कि अली बंगश के भाई हैं. Both are excellent cricketers, very well known players in Houston.
Both of them played from minor league as well. Or Hamza Bangarsh coming round the wicket to Sher Zaman. Oh, बहुत वाइड बॉल, काफ़ी शॉर्ट करना चाहते थे बॉल को और लाइन मिस की completely, went towards leg side और wide call by the umpire, a good collection by the keeper. जब Bangarsh will continue और बहुत अच्छी डिलीवरी इस दफ़ा और अच्छा खेला, स्ट्रेट बैट से खेल रहे हैं शेर जमान, दो बाउंड्रीज उन्होंने बनाई दोनों ऑफ की तरफ, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले थे शेर जमान ने। हमजा बंगश जो है अच्छे कमबैक बॉल का, फर्स्ट बॉल वाज वाइड, सेकंड वाज अ रियली गुड डिलीवरी और ये एक दफ़ा फिर वाइड मिलेगी, इस दफ़ा कीपर कनेक्ट नहीं कर पाए और एक वाइड के साथ एक्स्ट्रा रन मिलेगा। आई थिंक ही इज पुशिंग बॉल सो रियली लिटिल हार्डर एंड बॉल इज and losing the length or line of the ball. Extra run with wide, now is coming over the wicket. He's coming over the wicket for right hand batsman Khyber. Oh, ball अच्छा shot खेला towards the cover, fielder वहाँ मौजूद और single मिलेगा, ऑफ बॉल थी, अच्छा प्रॉपर ड्राइव किया और फील्डर वहाँ मौजूद थे और लेकिन फिर भी एक रन लेने में कामयाब हुए। It's always good to see a proper cricketing shot in tape ball cricket. Usually batsman has tendency to go way across the line. और excellent delivery, बहुत अच्छी बॉल, just missed this stump. Bowler is just wondering how did it miss the stump और बहुत अच्छी बॉल कराई हमजा बंगश ने। 4 रन दिए हैं अब तक सिर्फ इन्होंने, उसमें से 2 रन वाइड के हैं और 3 बॉलें करवा चुके हैं हमजा बंगश। रिक्वायर्ड रन रेट इज 10.37 और अच्छी डिलीवरी और अच्छा शॉट, फील्डर नीचे आते हुए और कवर पे बहुत अच्छा कैच लिया उन्होंने, अच्छा कनेक्ट किया था शेर जमान ने, गॉट द एलिवेशन बट डिडंट गेट द डिस्टेंस और इस तरह पहली विकेट नुकसान उठाना पड़ा अफगान टाइगर्स को। शेर जमान कैच आउट हुए इन द कवर रीजन और स्कोर इज 19, द लॉस ऑफ 1 विकेट। वेट करना पड़ेगा कि who will be the next batsman और हमजा बंगश ने अच्छी बॉलिंग कराई है, अब तक 4 रन दिए हैं सिर्फ। रन रिक्वायर्ड रन रेट इज 10.56। We're waiting who's coming up next. I think Sher Zaman is probably coming in next. Very well-known player. I think Nanjal. I think he's well-known in hardball cricket as well. He's the captain of Pakhtun United, who is a Division 3 team, and he's been playing all around in Houston. Sher Zaman. Hamza will continue. और अच्छा शॉट खेला टूवर्ड्स द ओवर द हेड ऑफ कवर और इस तरह 4 रन मिलेंगे। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट था खैबर का, ऑफ ए बॉल थी, अच्छा कनेक्ट किया राइट ओवर द हेड ऑफ कवर प्ले फील्डर
और इस तरह जो है वो 4 रन मिलेंगे। लास्ट बॉल है हमजा के ओवर की और टॉप एज लगा। हमजा खुद इस दफा नीचे आ रहे हैं और कैच लेने में कामयाब और बड़ी विकेट मिली है इस दफा हमजा को। बॉल टॉप एज लगा, इट गॉट वेरी हाई इन द डार्क स्काई, बट हमजा बंगश ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा और इस तरह सेकंड विकेट मिली है इनको अपने इस ओवर में। और स्कोर is 23 with the loss of 2 wickets at the end of over number 2. Run rate is 11.5 and required run rate is 10.5. और ज़ैबी आए हैं बैटिंग करने के लिए और इस वक्त अफगान टाइगर्स को जो है थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं because they lost 2 quick wickets. Score 23 है, run rate is still under control but they were losing the wickets. So Asad will be the next bowler. Again, he's also a very good bowler. Ball with a good line length and a good pace. Or Hamza Bangash is showing the ball was really moving because slightly windy. और हमजा पंकज ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। बॉल काफ़ी ऊंची गई टॉपिक लगने के बाद, गॉट अ हाई एलिवेशन, but Hamza Bangash kept his eye on the ball and got a clean catch and got a critical wicket for his team. Asad आए हैं नए बॉलर। अच्छी डिलीवरी शेर जमान ने पुल, काफ़ी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कंप्लीटली मिस द बॉल, यू वांट टू प्ले टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन, लाइन में नहीं आए बॉल की और मिस की बॉल। इस तरह एक डॉट बॉल मिलेगी अफगान फैल्कन्स को। रिक्वायर्ड रन रेट इज 10.72 नाउ और अभी भी गेम काफ़ी बाकी है, कंट्रोल में है और अच्छा शॉट खेला। इस दफ़ा फील्डर नीचे आएंगे लेकिन फिर काफ़ी दूर रही उनके लिए टुवर्ड्स द कवर रीजन, 2 रन लेने में कामयाब। अच्छा खेला शॉट टुवर्ड्स द ऑफ, बॉल वाज ऑन द ऑफ साइड एंड ही प्लेड टुवर्ड्स द ऑफ साइड। असद जो है अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही रन दिए हैं 2 बॉलों पे। Required run rate is 10.7. Just a reminder, Falcons scored 106 in 10 overs quota और शॉर्ट बॉल थी, खेल दिया टूवर्ड्स द मिड विकेट और फील्डर वहाँ मौजूद और सिर्फ 1 ही रन बनेगा अफगान टाइगर्स को। अभी तक तो अच्छा ओवर किया है असद ने और दे भी फेस हिज फर्स्ट बॉल। 10 overs you didn't get too much of a time, और swing किया, shuffle towards the off side, swing करने गए बॉल को towards the leg side, बॉल थी ऑफ साइड पे, इस तरह क्रॉस शॉट खेला। क्रॉस शॉट में you really have to perfect, अगर आपने बॉल मिस की, लाइन मिस की तो going to be most likely a dot ball और इस तरह एक डॉट बॉल मिली है Falcons को। Now required run rate is creeping up to 11.05। अच्छी डिलीवरी और एज लगा, went through the keeper and went through the third man player fielder and they got 4 runs. Lucky runs for Afghan Tigers, but it doesn't matter how runs are coming. They need runs and they got 4 runs. Run rate इस दफा फिर नीचे आई 11 के 10.74, 30 हो चुका है स्कोर और तीसरे ओवर का गेम जारी है। ज़ेबी ने अभी 2 बॉलें खेली हैं, 4 रन बनाए हैं और ये वाइड कॉल होगी।
अंपायर ने वाइड कॉल की. He shuffled a bit but was still out of his reach और अंपायर ने वाइड कॉल की. क्या अच्छा मैच. It's going to be exciting finish. It seems like required run rate is 10.6 और इस दफ़ा एक और एक्स्ट्रा रन मिलेगा towards the leg side. He shuffled and best bowler was trying to hit the stump but missed the line और went towards the leg side और एक एक्स्ट्रा रन और मिलेगा. 2 वाइड करवा चुके हैं अब तक असद और 5 बॉलों पे 9 रन दे चुके हैं. Hamza Bangash is coming, just giving him tips to stay focused in the line and ask where to keep the ball. Because extra runs gonna hurt the Falcons team. Oh, बहुत अच्छी डिलीवरी. क्रॉस खेलना चाहते थे और went through between his legs और got the leg stump. और बहुत ही अच्छी डिलीवरी कराई असद ने. गुड कम बैक बॉलिंग बाय असद. 2 वाइड करवाई थी इससे पहले लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छी लाइन. आई थिंक ही लिसन टू हमजा बंगश की कौन सी लाइन पे बॉल करानी है और इस तरह बैट्समैन जेबी काफ़ी क्रॉस खेलने गए तो बॉल और इनकी लेग स्टम्प लूज की और इस तरह अफगान टाइगर लॉस्ट इट्स third wicket. We're waiting for scorecard to be updated, but I think they lost their 3rd wicket. Or the required run rate is still 10.47. और run rate जो अफगान टाइगर्स का खेल रहे हैं 11.29. और इस तरह end of the 3rd over, the score moved up to 32. Wait for the new bowler and see who's going to ball the next over. I think it's Nasir Jamali if I'm not wrong. But we'll still wait for a scorer to confirm that. काफ़ी वाइड थी बॉल. ऑफ के बाहर गई और 1 रन मिलेगा. Still waiting for scorecard to update to show who is the bowler. Oh, ball अच्छी delivery. It came in and went outside. Yeah, Nasir Jamali, Nasir Jamali is their bowler. और पहली बॉल वाइड थी और दूसरी बॉल डॉट. अच्छी बॉल was coming out but then hold the line. Ball was able to hold the line and stay straight and batsman missed it. और शेर जमान ने अच्छा और towards the leg ball थी. straight bat से खेला towards the long on region और 1 ही रन बनेगा. Nasir Jamali, very well-known player. Also, he plays everywhere in Houston. और अच्छी बॉल ऑफ पे थी. ऑफ पे खेला बैट्समैन ने टूवर्ड्स द कवर. फील्डर वहाँ मौजूद थे और 1 ही रन बनेगा. और इस तरह स्कोर मूव अप टू 34. लॉस ऑफ 3 विकेट. 35 to be exact. और so 4th ओवर का गेम जारी है. रन रेट climbed up to 11 point. और अच्छी बॉल again came in and went out. Excellent bowling by Nasir Jamali. और शेर जमान wasn't sure what to do with this ball or was not really committed to hit the ball. और इस तरह एक और बॉल मिली है Falcons को. Required run rate is climbing up with every dot ball. और शॉर्ट बॉल इस दफा कनेक्ट करने में कामयाब रहे और 6 रन मिलेंगे. शॉर्ट थी बॉल
और शेर जमान ने इस दफ़ा बॉल की लेंथ पिक की और खेल दिया टूवर्ड्स द लॉन्ग ऑन, और इस तरह 6 रन मिलेंगे अफगान टाइगर्स को। और करेक्शन, आई थिंक umpire has called it 4 runs. I think best bowler thought it's over already, but there's one more delivery remaining in this over. Required run rate is 11.03. और अच्छा शॉट खेला टूवर्ड्स द लॉन्ग ऑफ रीजन और बॉल, एक और चौका। Excellent hitting by Sher Zaman. Proper cricketing shot था इस दफ़ा, और उन्होंने बॉल ऑफ पे थी, अच्छी लेंथ मिली, हाफ वॉली मिली इनको और पूरा एडवांटेज उठाया लेंथ का, और 4 रन मिलेंगे अफगान टाइगर्स को। स्कोर मूव अप टू 43 at the end of over number 4. The required run rate is 10.67 now. साथ बॉलिंग करने आ रहे हैं। We'll wait for the next bowler. Change of bowling, I think Saad is coming in. The scorer needs to update the bowler. और अच्छी डिलीवरी, आउट स्विंग बॉल और अच्छा खेला बैट्समैन ने। सिर्फ एक रन बनेगा अहमद एस, और शेर अब्दुल दोबारा स्ट्राइक पे आएंगे। और टॉप एज और कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए, और ओवर थ्रो मिलेंगे, और कीपर ने कैच नहीं कर पकड़ सके, और थ्रो वाइड थ्रो था, और इस तरह एक एक्स्ट्रा रन बनेगा। 7 पंजवानी बॉलिंग कर रहे हैं। और स्कोर इज नाउ 45, और 5th ओवर का गेम इज इन प्रोग्रेस। बहुत अच्छी डिलीवरी, कैच caught behind की अपील by the keeper, but no response from the umpire. I think there's some changes in the keeper. और इस तरह स्कोर जो है 45 रन। थर्ड, they already lost 3 wickets. अच्छी डिलीवरी थी, साथ की खेल दिया टूवर्ड्स द लॉन्ग ऑन, और सिंगल मिलेगा। और बहुत अच्छी डिलीवरी का इसाद ने। इट वाज क्लोज टू वाइड, बट बॉल वाज आउट स्विंग, और अच्छी बॉल डिलीवरी पर साथ, और कोई रन नहीं मिला इस बॉल पे। डॉट बॉल आएगी, और रिक्वायर्ड रन रेट इज ऑलमोस्ट टचिंग 12 नाउ। We need
61 runs in 5.1 overs. और इस दफ़ा फिर शेर जमाल ने खेला, इस दफ़ा towards the long off region और 2 रन बने. Good running between the wicket by शेर जमान and असद अहमद. और इस तरह 5 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर हुआ है 48. The loss of 3 wickets. Required run rate is almost 12. 11.80 to be exact. They need 59 runs in last 5 overs. और नासिर जमाली will continue. अच्छा बॉल, पहला ओवर काफ़ी अच्छा कराया इन्होंने. अच्छा स्विंग बॉल करते हैं. हार्ड बॉल में भी काफ़ी वेल नोन प्लेयर है नासिर जमाली. इस तरह अभी 59 रन और चाहिए अफगान टाइगर्स को जीतने के लिए. 5 ओवर्स द गेम अभी बाकी. जस्ट अ रिमाइंडर, इफ यू जस्ट tuned in, it's the final of Texas Cup 2022 between Falcons and Afghan Tigers. Both teams are local Houston based team. नासिर जमाली अपना सेकंड ओवर कराते हुए फैल्कन्स ने पहले बैटिंग की और 106 रन बनाए और 107 का टारगेट दिया. और बहुत अच्छी डिलीवरी नासिर की, काफ़ी अच्छी लेंथ थी. बैट्समैन उसको कनेक्ट नहीं कर पाए. देयर वाज नो रूम टू गो अंडर द बॉल. और इस तरह एक डॉट बॉल मिलेगी नासिर जमाली की. दूसरा ओवर करवा लें अपना. एक और अच्छी डिलीवरी, उसको ऑफ की बॉल को लेग की तरफ पुल किया, गई लॉन्ग ऑफ ऑन की तरफ और सिंगल मिलेगा. Required run rate is over 12.43 for the first time in this run chase. They need big hits. Oh, swing and a miss. Again, बहुत अच्छी डिलीवरी थी. उसको बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और लाइन मिस की बॉल की. I think he wanted to play towards the long on और बॉल मिस की. और इस तरह डॉट बॉल. Required run rate is now touching 13. So you can see every dot ball will add a pressure to Afghan Tigers run chase. और इस दफ़ा फिर मिस की बॉल और बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ से बॉल करवा रहे. इस दफ़ा इन्होंने चेंज किया पेस और शेर अफजल couldn't connect it at all. और इस तरह एक और डॉट बॉल मिलेगी. Falcons को required run rate is now 13.38 or now heading towards 14. शॉर्ट बॉल कनेक्ट करने में कामयाब हुए और 6 रन मिलेंगे. गुड पिक और अच्छा पुल किया शेर अफजल ने, काफ़ी अच्छी बैट स्पीड के साथ. और इस तरह एक 6 रन मिलेंगे टूवर्ड्स द डीप मिड विकेट. इस 6 रन के साथ रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ 12.48 and they need 52 runs in 4.1 overs. Sheikh Abdul is playing on 21. He faced 14 deliveries. उनके साथ जो है वो अहमद हैं जिन्होंने 4 रन बनाए हैं 6 बॉलों में. काफ़ी वाइड जाके बॉल कर रहे हैं नासिर जमाली. और इस दफ़ा लॉन्ग ऑन की तरफ खेला लेकिन वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद थे और सिर्फ एक ही रन बनेगा. एक्सीलेंट बॉलिंग अपने 2 ओवर के बाद. ही ओनली गिव 19 रन. कोई विकेट नहीं ले सकती लेकिन अच्छी डिसेंट बॉलिंग करवाई नासिर जमाली ने. और इस तरह Afghan Tigers need 51 runs in last 4 overs. Required run rate is 12.75. Just a reminder, Falcons ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की और 106 रन बनाए. The loss of 6 wickets. They gave a target of 107 to Afghan Tigers. They're playing pretty decent, but required run rate is keep climbing.
The required run rate is 12.75. There's some discussion in the middle कि कौन next over कराएगा. Next couple of overs are really important for Afghan Tigers and Falcons as well. अगर next 2 overs tight हुए तो run rate जो है काफ़ी quickly climb up करेगा, जो कि pressure add करेगा Afghan Tigers के ऊपर. इस तरह इस वक्त 4 ओवर बाकी हैं. 51 runs needed. Required run rate is 12.75. Asad will continue. He's going to do second. Oh, excellent delivery towards the offside. इसको कट करना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए शेर अफजल. और इस तरह डॉट बॉल मिलेगी. Every dot ball will add pressure to Afghan Tigers. Just a reminder, if you just tuned in, this is the final between Falcons and Afghan Tigers, Texas Cup 2022. और white ball call होगी. काफ़ी push किया ball को, but couldn't control the line of the ball, and umpire called it a white delivery. और असद का ये सेकंड ओवर है. अभी तक इन्होंने 10 रन दिए हैं, 1 विकेट ली है. और अच्छे डिलीवरी टॉप पिच लगेगा. कीपर इस दफा देखिए कौन नीचे आता है और असद ने खुद कैच लिया. काफ़ी दफ़ा जगल किया बट इवेंचुअली वाज एबल टू गेट होल्ड ऑफ इट. और इस तरह शेर अफजल आउट हो गए. और दिस इज द 4th विकेट लॉस बाय अफगान टाइगर्स. शेर अफजल वाज प्लेइंग नाइस. 22 रन बनाए थे इन्होंने और 16 डिलीवरीज फेस की थी इस बॉल से पहले. और इस तरह क्रिटिकल टाइम पे अच्छी विकेट मिली है फैल्कन्स को. और रिक्वायर्ड रन रेट इज 13.64. Huddle up by Falcons now. They're looking promising. Asen Tony आए हैं खेलने के लिए. वो भी अच्छे striker of the ball. Unfortunately, the fielding, he dropped 2 catches back to back. He must be feeling a little pressure with his fielding performance. Now he needs to redeem with his batting performance. असद की सेकेंड ओवर चल रहा है और 2 विकेट ले चुके हैं अब तक असद. और वाइड थी, पुश करना चाहते थे बॉल टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द स्टंप बट लाइन को कंट्रोल नहीं कर पाए और इस तरह एक्स्ट्रा रन मिलेगा. रिक्वायर्ड रन रेट इज 13.36. जब गेम स्टार्ट हुआ था तो रिक्वायर्ड रन रेट वाज 10.5, अराउंड 10.6. अब जो है वो क्लाइम्ड अप टू 13.36. और स्विंग एंड अ मिस. गेंद बॉल को मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे और बॉल वाज ऑन द ऑफ साइड और कनेक्ट नहीं कर पाए. और इस तरह रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ एग्जैक्ट 14. दे नीड बिग ओवर्स. एवरी डॉट बॉल विल एड अ प्रेशर टू अफगान टाइगर्स. और ये शायद वाइट कॉल होगी. वाइट कॉल की अंपायर ने. काफ़ी डिसेंट बॉलिंग कराई असद ने. 2 विकेट ले चुके हैं अब तक असद और एक्स्ट्रा रन दिए हैं उन्होंने लेकिन कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं दिए. अभी तक 12 रन दिए हैं. कई दूसरा ओवर जारी है और अच्छा शॉट खेला टूवर्ड्स द
और excellent catch by deep mid wicket fielder. और इस तरह अफगान टाइगर्स अपनी 5th विकेट लूज करने के बाद और अंडर प्रेशर आते हुए अच्छा शॉट खेला था, लेकिन couldn't get the distance और फील्डर वहाँ मौजूद थे डीप मिड विकेट पे, और इस तरह एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा वन टाइगर्स को. रिक्वायर्ड रन रेट इज 14.7 now. They need 49 runs in 3.2 overs. Every dot ball or if they lose a wicket is going to add a lot of pressure to our one Tigers. It's now looking pretty promising for Falcons. They are on top at the moment. They need a couple of overs. Ahsan Dhoni is also a good hitter of the ball. He can hit the ball and clear the rope with no effort at all. और वाइड बॉल मिलेगी. आगे बढ़ के खेलना चाहते थे एहसन, और असद ने लाइन अपनी मिस की. wanted to push it in towards the middle of the stump, but he lost his line, और इस तरह एक्स्ट्रा रन मिलेगा Falcons को. रिक्वायर्ड रन रेट इज 14.4 now. और अच्छा शॉट खेला टूवर्ड्स द मिड विकेट, वहाँ फील्डर मौजूद but couldn't collect the ball, और इस तरह बाउंड्री मिली एहसन को. मच नीडेड बाउंड्री फॉर One Tigers. Required run rate has gone down 13 to 13.89. 44 more runs needed by One Tigers in 3.1 overs. और 63 पे स्कोर है टोटल इनका. 5 विकेटें इनकी गिर चुकी हैं. इस वक्त एहसन खेल रहे हैं के साथ नूर जमान. असद ने 3 विकेटें ले चुके हैं अब तक. बहुत अच्छी बॉलिंग की है असद ने. 16 रन दिए हैं और बहुत अच्छा शॉट खेला, और 6 रन बनेंगे शायद. वी वेटिंग फॉर द फील्डर्स कॉल, बट आई थिंक इट्स 6 रन. या एक्सीलेंट शॉट बाय एहसन, और 6 रन मिलेंगे फैल्कन Afghan Tigers को. और रिक्वायर्ड रन रेट इज ड्रॉप डाउन टू 12.67. स्टिल लॉन्ग वे टू गो. 38 रन नीडेड इन लास्ट 3 overs. और एहसान ने अच्छी बैटिंग की है अब तक. 10 रन बनाए हैं 2 बॉलों पे. और लेट्स सी कि कौन बॉलिंग करने आएगा. मुझे लगता है अली बंगश आएंगे शायद. A very good bowler, very well-known player in Houston. और ये अफगान टाइगर्स को ये बड़ा ओवर चाहिए ताकि वो रन रेट को थोड़ा और नीचे लेकर आए, और एटलीस्ट ट्राई टू स्टे विद द रिक्वायर्ड रन रेट ताकि प्रेशर ऑन आए ना हो. 3 more overs to go. 38 more runs needed by One Tigers. और शॉट खेला टुवर्ड्स द मिड विकेट, लेकिन यहाँ फील्डर वहाँ मौजूद हैं और शायद एक ही रन बनेगा. गुड थ्रो टुवर्ड्स, और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. बहुत अच्छी रनिंग, बहुत अच्छी रनिंग. They saw the slight misjudgment by the fielder, and they took advantage of it and got an extra run. Required run rate is 12.71 now. और वाइड कॉल करेंगे अंपायर. अभी ऑफ से बाहर बॉल पुल करना चाहते थे. अली बंगश is trying to keep the ball away from the batsman but couldn't control the line. और इस तरह सिर्फ
अच्छी डिलीवरी थी और kind of close to being wide, but good judgment by the umpire. Was slightly inside the line. That line is a guiding line, and good decision by the umpire. वो कॉल नहीं की वाइट इसको और इसमें डॉट बॉल मिलेगी. रिक्वायर्ड रन रेट इज 13.12 और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए towards the deep mid wicket or probably towards the deep fine leg और 6 रन बनेंगे. अफगान टाइगर्स को बड़ा ओवर चाहिए था और ये लग रहा है कि ये शायद बड़ा ओवर आ जाए. 9 रन बन चुके हैं अब तक 3 बॉलों पे और some discussion going on between the keeper and bowler Ali Bangash. अच्छी हिट की नूर जमान ने और रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ अंडर 12, 11.60 to be exact. 29 runs needed in 2.3 overs. बस कंटिन्यू करेंगे. अब तक 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में. 3 ओवर बॉलें और बाकी हैं और स्विंग एंड मिस आगे बढ़ के खेले लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए. अगेन आई थिंक ही वुड रादर कीप हिज बैलेंस देन हिट गोइंग टू हार्ड एट द बॉल बिकॉज ही कैन सर्टनली clear the boundary or with his clean hitting he doesn't have to push too hard. Two more balls remaining in this over. Ali Bangash के और इस दफा फिर wild swing. I think I would rather call it a wild swing, not looking at the ball where the ball is pitching and just going for big shots. I think that's probably not the purpose of if you no dot balls needed for one Tigers. और अच्छी डिलीवरी लेकिन बहुत अच्छी बॉल थी और लेग बाय ने लेग बाय हुई. देयर इज नो LBW, देयर इज नो लेग बाय. There's some discussion probably. Yeah, it's the end of 8 overs. The required run rate is now 14.5. One Tigers need 29 runs in last 2 overs. अब देखिए कौन आएगा. लगता है हमजा बंगश himself will come to ball. It's coming to the end. Last 2 overs remaining. 29 runs needed by Afghan Tigers. Good performance by Falcons. पहले बैटिंग करते उन्होंने 106 रन्स बनाए. 107 का टारगेट दिया. अफगान टाइगर्स अच्छा खेल रहे हैं. अभी भी ऑलमोस्ट 10 की रन रेट पे खेल रहे हैं. 9.75 to be exact. But required run rate has gone up to 14.5. So this over needs to be big for Afghan Tigers. और वाइड बॉल होगी फॉर श्योर. काफ़ी बाहर बॉल थी और एसन ने बॉल जाने दी. गुड जजमेंट एंड गुड डिसीजन बाय द अंपायर और इस तरह वाइड बॉल. रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ 14. और टॉप एज लगा. फील्डर नीचे आ रहे हैं लेकिन प्रॉब्ली कोई ना पहुंच सके और 2 रन बनेंगे और शायद तीसरा रन बनाने के लिए जाएंगे और 3 रन लेने में कामयाब. वाह व्हाट अ थ्रो और ऑलमोस्ट हिटिंग द स्टंप्स. बहुत पीछे थे एहसान लेकिन 3 रन. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और एक बॉल के साथ जो है वो 4 रन आ चुके हैं. पहली बॉल वाज वाइड और फर्स्ट बॉल पे 3 रन बने और उसका रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ 13.64. 25 मोर नीडेड बाय वन टाइगर्स. 82 रन बना चुके हैं अब तक. तो काफ़ी
दे नीड अ बिग ओवर, और ये ओवर उनका अगर बड़ा आ गया तो काफ़ी कंट्रोल में आ सकता है गेम। नासिर जमाली आए हैं लॉन्ग ऑन से कुछ मशवरा देने हमजा बंगश को, कुछ फील्ड एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। और ये वाइड कॉल होगी, तो फिर वाइड बॉल अगेन। ही वांट्स टू कीप द बॉल अवे फ्रॉम द बैट्समैन रीच, बट लॉक couldn't control the line as much as he wanted, और इस तरह एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा वन टाइगर्स को। शॉट खेला, कनेक्ट नहीं कर पाए, आगे बढ़ के खेलना चाहते थे और टॉप पेज लगा टूवर्ड्स हिज बॉडी, और एक रन बनेगा अफगान टाइगर्स को। स्कोर जो है वो 84, रिकॉर्ड रन रेट इज 13.80 नाउ, 23 रन्स नीडेड इन 1.4 ओवर्स। खेलेंगे हमजा बंगश को, बड़ा शॉट चाहिए उनको, और आगे बढ़ के खेले, एक रन 2 रन बनाना चाहते हैं, और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा थ्रो आया लेकिन बैट्समैन ने पहुंच चुके थे। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रन मिलेंगे, और कमिंग टू एक्साइटिंग फिनिश। रिक्वायर्ड रन रेट इज 14, 21 रन्स नीडेड in 9 deliveries. But very good running by Hassan and Noor Zamani. और शॉट खेला टूवर्ड्स द डीप मिड विकेट, फील्डर वहां मौजूद हैं और शायद 2 रन लेंगे। गुड, एक दफा फिर बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और काफ़ी प्रेशर में रखा फील्डर को। ही कॉल्ड टू एज सून एज ही हिट द बॉल, और फील्डर वहाँ मौजूद थे, और वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और रिक्वायर्ड रन रेट इज 14.25, 19 मोर नीडेड इन 1.2 ओवर्स। काफ़ी एक्साइटिंग फिनिश की तरफ जा रहा है ये। नाइस ब्रीज अक्रॉस द फील्ड, तो इस तरह जो है वो बड़ा शॉट, ऊंचा एलिवेशन मिलेगी तो शायद वो बॉल में स्टे विद इन द बाउंड्री। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। शफल करते हुए, और अंपायर कीपर से बॉल छुटी, और शायद और एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा, वाइड +1, और शफल किया, बैट्समैन बॉलर अपनी लाइन लूज कर दी, और कीपर couldn't collect the ball, और इस तरह 2 रन आएंगे। काफ़ी एक्साइटिंग हो चुका है मैच, 17 more needed, 1.2 overs remaining. Just a reminder, it's the final of Texas Cup 2022 between Falcons and AFGHAN Tigers. Falcon won the toss and batted first and scored 106. AFGHAN Tigers chasing 107. They lost 5 wickets already, and Hassan Tony and Noor Zamani are on the field right now. Oh, bold कर दिया, बहुत अच्छी डिलीवरी, excellent bowling by Hamza Bangash, timely wicket for Falcons, बिल्कुल accurate line, काफ़ी यॉर्कर लेंथ पे बॉल थी, कनेक्ट नहीं कर पाए, और स्विंग की और मिस की, यू मिस आई हिट, और हमजा बंगश ने टाइमली विकेट ली है फैल्कन्स के लिए, और इस तरह एक और विकेट नुकसान उठाने के बाद the score हुआ है 90, loss of 6 wickets, 7 balls remaining and they need 17 runs to win.
हमजा बंगश ने 3 विकेटें ली हैं अब तक, और इनकी लास्ट बॉल आने वाली है। 20 रन दिए हैं अपने दो ओवर में। जैसे रिमाइंडर से 10 ओवर्स गेम, एवरी बॉलर्स कैन डू मैक्सिमम ऑफ 2 overs. 17 runs needed in 1.1 ball, 7 balls to be exact. और अच्छी डिलीवरी थी, यॉर्कर था, खेल गया towards the long on, और they're going for 2, और again good running between the wicket. एसन बहुत अच्छी रनिंग करते हुए 2 रन मिलेंगे, और इस तरह इन 9 overs के बाद स्कोर हुआ है 92. They lost 6 wickets. They need 15 more runs in the last over to win the Texas Cup 2022. Discussion going on in the field कि कौन कराएगा last over. बॉलिंग पे नजर दौड़ाएं तो अली बंगश 2 करा चुके हैं। अली बंगश, हमजा बंगश, असद मिर्जा, नासिर जमाली और अब साद पंजवानी शायद कर ले। अच्छा, पहले ओवर में इन्होंने सिर्फ 5 रन दिए थे, अच्छी बॉलिंग की थी। तो आई थिंक ही इज गोना कम बैक to finish his last over of the quota and last over of the inning as well. 15 रन चाहिए, 15 runs needed in last over. 6 balls, 15 runs. एक बड़ी हिट डेफिनेटली चाहिए। एसन कैन हिट द बॉल, जो कि इन्होंने अभी शो भी किया कि ही स्कोर्ड 1 6 and 1 boundary. Field adjustment. Of course, they need everyone close to the line, right on the top of the boundary line, or very close to the boundary line. They need to save boundaries. Single probably won't hurt as much as boundaries. Tony really last over, 15 run चाहिए, last over है, exciting finish. और स्विंग एंड अ मिस, और शायद रन आउट हो जाए, लेकिन साद ने नहीं थ्रो किया, और एसन टोनी वांटेड स्ट्राइक. आई थिंक ही शुड बी ऑन स्ट्राइक. और अब 15 रन चाहिए 5 बॉलों पे, एक बड़ी हिट तो डेफिनेटली चाहिए. और शिफ्टिंग अ लॉट, और टॉप एज लगा, और शायद बाउंड्री हो जाए, और ये 4 रन went over the keeper head, or couldn't get to the missed the fielder as well on the far deep fine leg. और इस तरह 4 रन मिलेंगे. अभी 11 more needed in 4 balls. It's coming down the wire, which was expected. Again, Falcons or अफगान टाइगर्स ने कोई मैच नहीं लूज किया था लीग में, और सेमीफाइनल में जाओ से वन, एंड दे आर रियली लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है दोनों टीमों की पूरे टूर्नामेंट में, एंड वर्दी टू बी इन द फाइनल्स ऑफ टेक्सास कप 2022 एट द ब्यूटीफुल फैसिलिटी ऑफ ICC MC ईसा क्रिकेट क्लब एंड मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. और बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं. ही इज शफलिंग अ लॉट, 2 रन बनाने जाएंगे, लेकिन देयर इज नो वे यू कैन मेक 2 रन्स. और एसन ने कॉल किया, और इस तरह एक ही रन बनेगा. लास्ट 3 balls 10 runs. एक बड़ा हिट चाहिए फॉर श्योर. 3 4s will work, 1 6 1 4 will work, 2 6s will work also. क्लोज मैच हुआ. वन टाइगर अच्छी बॉलिंग की फैल्कन्स ने, और बहुत अच्छी डिलीवरी, कंप्लीटली डिसीव किया, और बैट्समैन थॉट मे बी अ वाइड डिलीवरी बट नॉट इवन क्लोज.
और बहुत अच्छी बॉल साथ थी और इस तरह लास्ट 2 बॉल्स पे 10 रन चाहिए 1 6 1 4 और 2 6 will work. बहुत ही अच्छा फाइनल हुआ है. It's coming down to last 2 deliveries. अभी तक पता नहीं चलेगा who will be the winner. और ऊंचे शॉट खेला और फील्डर और बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा फील्डर ने लॉन्ग ऑफ पे. वेरी गुड कैच. नाउ दैट वुड बी द गेम इटसेल्फ. और बहुत ही अच्छा शॉट था लेकिन फील्डर ने बहुत ही अच्छा लो कैच पकड़ा और इस तरह उन्होंने जो है विकेट 7th विकेट लूज की और अब स्कोर हो चुका है. they still need 10 runs in 1 ball remaining. Scorer is not upgraded the score yet, but it's 1 run 1 ball and 10 runs needed. Runs 10 balls to be exact, so still in the range for AFGHAN Tigers. They need 1 6 1 4 2 6s to win this Texas Cup 2022. इस तरह बॉल मिस की और नाउ Falcons is the champion of Texas Cup 2022. Excellent performance. They won the game by 9 runs. Well deserving win. Excellent performance with the bat and the ball to be able to defend 106. AFGHAN Tigers worked really hard. They put so much effort. They were kind of coming close, but Falcons kept the pressure on, kept wickets tumbling from the AFGHAN Tigers, and they won the game by 1 run by 9 runs. So congratulations to Falcon teams. Well deserving champion of Texas Cup 2022. Now that wraps up the presentation here. That wraps up the live coverage. Now we'll be right back with the presentation ceremony. Hang on with us. I hope you enjoyed the final coverage. The beautiful facility of ICCMC, ESA Cricket Club and Multi-Sports Complex. We will be right back with the presentation ceremony. Congratulations to Falcons.